Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. In this lecture, we will discuss Cauchy-Gaursat theorem. This is a very powerful theorem in complex analysis that deals with the integral of a function. It simply says whenever we are having an analytic function and we are having a contour which is simple closed contour, then the integral of analytic function along the simple closed contour C is always equal to 0. इस लेक्चर में हम सबसे पहले कॉशी के स्टेटमेंट को समझेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉशी गॉर्से थ्योरम। कॉशी ने एक स्टेटमेंट बताया और उन्होंने कहा कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, तब फंक्शन का एक सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर के अलोंग इंटीग्रल हमेशा जीरो होता है। फिर गौरसे है और उन्होंने कहा कि अगर फंक्शन एक बार एनालिटिक हो ही गया है तो उसका हर ऑर्डर का डेरिवेटिव हमेशा एनालिटिक होगा, और जब फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब हर ऑर्डर के डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल भी होंगे, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होंगे। इसका मतलब द मोमेंट वी आर हैविंग द एनालिटिसिटी ऑफ अ फंक्शन एफ, देन वी डोंट रिक्वायर्ड द कॉन्टिन्यूटी of first order derivative of the given function at all. ओके, सो ये कॉशी और कॉशी गॉर्से थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉशी गॉर्से थ्योरम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी के साथ डील करता है, जबकि गॉर्से उसी कंडीशन को थोड़ा रिलैक्स्ड कर देता है, उसको रिमूव कर देता है और उसके बाद अपना वही कॉशी वाला स्टेटमेंट कॉशी गॉर्से थ्योरम बन जाता है। So let us start this lecture by writing first the statement of Green's theorem, because we are going to prove the Cauchy statement using the Green's theorem. You know from the calculus Green's theorem हमेशा हमें जो सरफेस इंटीग्रल जो लाइन इंटीग्रल है उसको सरफेस इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म करता है। तो if you remember that statement, that is okay, but if you don't remember, I am going to once recall that theorem, then I will write the statement of Cauchy's theorem and will prove that statement. Okay, so we will start first by Green's theorem that transform line integral into surface integral. ठीक है, this theorem says if C is a positively oriented piecewise smooth simple closed curve forming the boundary of a region R within the domain D, and if the real valued function real valued functions p x comma y and q x comma y along with their first order partial derivatives are continuous on domain that contains C and R, then we have the following very beautiful result that says integral along C, this is the line integral of p dx plus q
dy can be calculated over the region which defines the surface integral of partial derivative of q with respect to x minus partial differentiation of p with respect to y, and take the difference of these two partial order derivative, and then we have dA that denote the surface integral. Okay, this is the statement of Green's theorem, and we are going to use this equation while proving the Cauchy's theorem. Okay, let me call this is number 1. Now we are coming to our main theorem, that is theorem, and this theorem is Cauchy's theorem. Okay, this theorem says, suppose that a function f is analytic in a simply connected domain D, and that f prime is continuous, that is the first order derivative, continuous in the domain D, then for every simple closed contour C in D, we are having integration along C of fz dz will be equals to 0. So this is very important one. Okay, तो आपके पास कोई भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन D है, उसके अंदर आप कोई भी सिंपल क्लोज कॉन्टूर C को एज्यूम करेंगे, वो C के अलोंग हमेशा फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हमेशा 0 होगा. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Cauchy's थ्योरम, and the proof is quite simple one, that is a direct use of Green's theorem. Okay, अब इस स्टेटमेंट में क्या है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और दूसरा फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. इसके बाद जब हम कॉशी गॉर्सेट थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस वाली कंडीशन को रिमूव कर देंगे, दैट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस. ओके, क्योंकि जैसे ही फंक्शन एनालिटिक हो गया तो वो हर ऑर्डर का डेरिवेटिव एनालिटिक होगा और मोर प्रिसाइजली कंटिन्यूस होगा, तो हमें अलग से लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, so let us start this proof by identifying the Green's theorem. Okay, so we can write fz is equal to u x comma y plus iota v x comma y, where of course this z is nothing but x plus iota y. Then what about this integration? Integration along C of fz dz will be equals to integration along C. In place of fz we are writing u x comma y, then plus iota v x comma y, and then in place of dz we are writing dx plus iota dy. Okay, now just simply multiply these two complex numbers and we are having integration along C. You can say I can write uxy dx minus vxy dy. This is the real part of this integration plus imaginary part, that is iota time u x comma y dy, and then plus vx comma y dx. Okay, we just multiply these two numbers and hence we are having this particular integral. Okay, now we know that integration of real plus imaginary part is same as the integral of real and imaginary part.
So that is nothing but equal to integration of u x comma y dx minus v, or I can write plus minus v x comma y dy, so that we can identify this as p dx plus q dy. यहाँ पर q dy की q xy की जगह क्या है, माइनस v. ओके, then plus iota integration along c, we are having u x comma y dy plus v x comma y dx. Okay, so this is the integration, or you can say the real and the imaginary part that can be identified using this step. Okay, now just apply the Green's theorem on these statements. So you can see, अगर हमारे पास पी डी एक्स और क्यू डी वाई होता है तो हम लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू वाई. तो अगर हम इस थ्योरम को यूज करें, देन दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन अलोंग r, this is the surface integration, and this will be equals to, since this is minus, so we will write minus v over curly x and then minus curly u over curly y. This is our real part of this integration, plus iota integration along the r. R is the region which is bounded by this contour c. So from this will be equals to u curly u over curly x minus curly v over curly y. Okay, and this is dA. Let me call this is equation number 2, and this is from Green's theorem. You need to write the statement of Green's theorem कि ये Green's theorem होती है. ठीक है, अब हमें given क्या है? Since given that fz is analytic in D, and whenever fz is analytic in D, then u and v, which are the real and imaginary part of this function fz, u and v satisfy Cauchy Riemann equations, right? That is, you can see curly u over curly x will be equals to curly v over curly y, and curly u over curly y is equal to minus curly v over curly x. ठीक है, अब अगर हम इन इक्वेशंस को यूज करें हमारे इक्वेशन नंबर 2 में, सो देन फ्रॉम equation number 2 you are able to write that integration along c of fz dz will be equals to integration along the region r, and we are having minus curly v over curly x, and in place of minus curly u over curly v curly u over curly y, we can write minus curly v over curly x. So this will be plus 1. Okay, so it will be plus curly v over curly x, and then dA plus iota time integration along r, and we are having curly v over curly y minus curly v over curly y. Okay, so this will be equals to 0 plus iota time 0, that is nothing but 0 complex number. Okay, and this completes the proof. This completes the proof. Okay,